happened in that election. And I said, let's do it again. And by doing it again, it became much more historic. It's a much more historic election, much more powerful election. And we have a mandate. We won every swing state. We won by millions of votes. We won 2,750 districts. We call them districts out of... It's an experience that इस वक्त गल्फ समिट जारी है और मोहम्मद बिन सलमान के बाद अमरीकी सदर इस वक्त खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाहिशमंद है। It's in Yemen, as you know, and last week they agreed to stop. They don't want to be targeting our commercial ships anymore. They said that's enough, that's enough. We did about 52 days, 52 nights. It didn't end. We just put in a budget of $1 trillion. It's our biggest budget, military budget we have ever put in. And the United States is very, very strong right now. It's amazing. In a short period of time, we've been there 100 days. And in a short period of time, we've done what a lot of people don't do in 4 years. We're a hot country, just like you're a hot area. And we're going to keep it that way. In Gaza, my administration shares the hope of so many in this region for future of safety and dignity of the Palestinian people. But that cannot happen as long as Gaza's leaders take delight in raping, torturing, and murdering innocent people. Can't have it. I greatly appreciate the constructive role that the leaders in this room have played in trying to bring the terrible conflict to an end, including by helping secure the release of American hostage Edan Alexander. It was a big day yesterday, a very important day. I was told just before I left that they were going to be releasing Edan. We thought Edan was dead 3 weeks ago. They said Edan was no longer living. And it was a very, very good thing. Ultimately, all hostages of all nationalities must be released as a stepping stone to peace, and I think it's going to be happening. A lot of things are happening. A lot of very positive things are happening on every front. With the support of leaders in this room, and they're great leaders, you are, we are currently exploring normalizing relations with Syria's new government, as you know, beginning with my meeting with President Ahmed al-Shara and Secretary Rubio's meeting with the Syrian foreign minister in Turkey after discussing the situation with Crown Prince Mohammed and President Erdogan of Turkey. I am also ordering the cessation of sanctions against Syria to give them a fresh start. It gives them a chance for greatness. The sanctions were really crippling, very powerful. And I spoke to Mohammed, and I spoke to our friend from Turkey, who we just spoke to also by phone now. But felt very strongly that this would give them a chance. It's not going to be easy anyway, so it gives them a good, strong chance. And it was my honor to do so. So we will be dropping all of the sanctions on Syria, which I think really is going to be a good thing. And we made a speech last night, and that was the thing that got the biggest applause from the room. We had a very crowded room with thousands of people, and the statement that got the biggest applause was dropping the sanctions on Syria. Likewise, in Lebanon, there's a new chance for a future free from the grip of Hezbollah terrorists if the new president and prime minister can rebuild an effective Lebanese state. We just appointed a very good ambassador, a friend of mine who's Lebanese, and I didn't even know that. And I said, why do you want to be the ambassador to Lebanon? That could be dangerous. He said, I don't care. I grew up there. I love the country. And I don't care if it's dangerous or not dangerous. I want to do that. And he's a very capable man, very successful man from the United States. And he's going to be your ambassador. He's going to do a great job. But this is a once-in-a-generation opportunity to forge a Lebanon that is prosperous and at peace with its neighbors. And I think things can really happen there. They've had a tough go of it for a long time. At the end of my first term, all of the momentum in this region was toward peace.
I especially want to thank and congratulate the United Arab Emirates and Bahrain for their vision and courage in signing the historic Abraham Accords. It was something that's a very big thing. I believe we would have had it filled out had the election been called fairly, which it wasn't. It was a rigged election. I hope that in the near future we can continue that progress. We have a mandate from the American people, the likes of which people haven't seen for 129 years. They say it was the most consequential election in America in 129 years. So that sounds like a long time, so we'll take that. But in the future, we'll continue that progress by adding more countries to the Abraham Accords. We have 4, and I think they're going to be filling up very rapidly. Biden didn't do anything because he never did anything about anything. He had no capability, he had no ability, and it was a shame what he's done to so many countries, including our own. We had an interesting fact. About a year ago, there was a story that we're having a hard time getting enlistments into the military, and it was at the lowest level almost ever. People didn't want to go into our military, and it just came out last week. You probably saw that we have now the strongest enlistment in the history of our country. They say 38 years. One said 37, one said 32, and one said ever. So we just had the strongest enlistment in the history of the United States of America. So think of it. In 1 year, we went from they can't get people to enlist to we have the strongest enlistment. And that includes the police departments, too. We're having a hard time getting people to be police, the great law enforcement arm that we're known for. And now we're setting records. It's hard to get a job. I mean, frankly, the lines of people wanting to be police officers and go into the military. And it's a matter of spirit. We have great spirit in the country right now. We've done a lot in 100 days, I'll tell you that. It's all started on November 5th with the election. But a stable and peaceful Middle East will be a successful and prosperous Middle East. And that's what you've done, and that's what you're doing. And, you know, it's amazing because when I was here last, it was fine. It was doing good. And then I see the things that you're doing here and in your countries. It's just an incredible what you're doing. Is the whole world is talking about it. The whole world is watching us. Look at all the news over there, the fake news. Look at them. The whole world is talking about what you're doing, and you're the envy of the world. Together, we're in this room, and we're going to forge a Middle East that will be a thriving commercial, diplomatic, and cultural crossroads at the geographic center of the world. That's what it is. It's the center of the world. I look forward to working with you, and I want to thank Mohammed. I want to thank you, Crown Prince. We have a special relationship. We have long had a special relationship, but it was an honor to spend a couple of days with you, and I'll see you again soon, and I'll see you a lot. Thank you all very much. Thank you. شكرا فخامة الرئيس على كلمتكم. والآن أدعو جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين لإلقاء كلمته، فليتفضل. شكرا سمو الأمير. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في مستهل كلمتنا أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدعوة الكريمة وما لقيناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأنها لمناسبة طيبة أن نجتمع اليوم متمسكين بروح الصداقة الوثيقة التي تزداد قوة ونموا عبر السنين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. ويسعدنا أن نرحب بفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تؤكد مشاركته في هذه القمة عمق الشراكة الاستراتيجية وأهميتها الراسخة। रियाज में एक गल्फ समिट इस वक्त जारी है और अमरीकी सदर ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा चाहता हूँ और पाकिस्तान भारत में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। खलीजी ममालिक ने हमेशा अमन के लिए काम किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि शाम से तमाम पाबंदियाँ उठा लेंगे। और वे बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का भारतीय फायरिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा, इंसानी जानों के नुकसानात, दुकानों, घरों, माल मवेशी और दीगर का जायज़ा लिया। मोदी की हालिया गुफ्तगू शिकस्त खुर्दा शख्स की थी। चौधरी अनवर हक ने कहा कि हर बार बातों से आप अपने अवाम को मुतमईन नहीं कर सकेंगे। हमारे शाहीनों ने भारत को उसकी दहलीज के अंदर घुस कर मारा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा था 3 जंगें कश्मीर के लिए लड़े, 7 और लड़ने को तैयार हैं। और कराची की बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। बिजली 5 रुपये 2 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक ने FCA की मद में कमी की दरख्वास्त दायर कर दी है। मार्च 2025 के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी मांग ली है। मज़ीद जान लेते हैं मलिक सईद से। सईद बताइएगा। बिजली सार्फिन के लिए ये अच्छी खबर सामने आई है कि के इलेक्ट्रिक की जाने से बिजली सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपये और 2 पैसे की यूनिट रसीद करने की जो है वो दरख्वास्त जमा करवा दी है। नेपरा में के इलेक्ट्रिक ने FCA की मांग में दरख्वास्त जमा कराई है, जो कि मार्च 2025 के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जमा करवाई गई है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्तों पर जो है समात 22 मई को समात करेगा। अथॉरिटी समात के बाद के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर हतमी फैसला जारी करेगी। गुज़िश्ता माह FCA की बाद में के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के 2 रुपये और 98 पैसे की यूनिट रिलीज से जो है वो महरूम हो गए थे। फरवरी की माना एडजस्टमेंट की बाद में 3 रुपये और 64 पैसे की यूनिट का रिलीज दिया गया था। के इलेक्ट्रिक ने माना एडजस्टमेंट की बाद में 6 रुपये और 62 पैसे की यूनिट की दरख्वास्त की थी। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त से सार्फिन को 6 अरब 66 करोड़ रुपये का रिलीफ मिलने का इम्कान है। नेपरा अथॉरिटी ने फरवरी की एडजस्टमेंट में से 3 अरब रुपये रोक लिए थे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबला थाना निश्तर के हदूद में मुबैना मुकाबले के दौरान 2 मुल्ज़िमान हलाक मुल्ज़िमान के शनाख्त ज़ुबैर और आतिफ के नाम से हुई है। दोनों मुल्ज़िमान अपने ही साथियों के फायरिंग से मारे गए हैं। हलाक मुल्ज़िमान के मफरूज़ साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। खुरम मलिक से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। खुरम अपडेट कीजिएगा। का लाहौर में एक और मुबैना मुकाबला जो है वो सामने आया है। मुबैना मुकाबले में 2 मुल्ज़िमान मारे गए हैं। मारे गए मुल्ज़िमानों की शनाख्त ज़ुबैर और आतिफ के नाम से हुई है। मुबैना पुलिस मुकाबला थाना निश्तर की हदूद में हुआ है। CCD जराए, जबकि मुकाबले में तमाम CCD एहलकार महफूज रहे हैं। दोनों मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है वो मारे गए हैं, जबकि हलाक मुल्ज़िमान के साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक मुल्ज़िमान के मफरूर साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और पुलिस का यही कहना है कि जल्द जो फरार मुल्ज़िमान है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन CCD का ये निश्तर के मुबैना पुलिस मुकाबले का वाकया पेश आया जिसमें 2 अफराद जाँ बाग हो गए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की का इजलास सालाना तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाए। वज़ीर-ए-आला की हिदायत नए बजट में सैलाब मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ज़राई तरक्की पर ख़ास तवज्जो दी जाए। शोबा सेहत हमेशा हमारी अव्वलीन तरजीह रहा है। अब हमें सेहत की सहूलत को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। तालीम के फ़रोग़ के लिए महकमा तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी होगी। गैर रस्मी तालीम को भी मुस्तहकम करना है। और महकमे मौसमियात ने मई के पहले हफ्ते में हीट वेव की पेशगोई कर दी है। 15 था 20 मई तक मुल्क का बेशतर हिस्सा हीट वेव की लपेट में रहेगा। जनूबी इलाके सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में शदीद गर्मी पड़ेगी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड होने का इम्कान है। वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, KP, गिलगित में भी दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है।
और सरकारी इदारों के मुलाजमीन की पाक फ़ौज के हक़ में रैली सेक्रेटरीट से पार्लियामेंट तक मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन ने रैली निकाली है। पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन ने शिरकत की, जबकि शुरा की फ़ौज पाकिस्तान के हक़ में ज़बरदस्त नारेबाजी। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद अली जैसे। अली अपडेट कीजिएगा।